Hey guys, welcome to Career Launcher, and we are here for SLAT 2026 with Victory Lab. And in this session, we are going to cover analytical reasoning. So, basically, what we are going to do analytical reasoning. So, we are going to cover more or less every topic that has been asked in SLAT, and now we are going to see. Hello, Chandralekha, how are you? So let's start all those questions. So now we are going to start question number one. Hello Kiki, how are you? Good evening, Shuchi. I am also fine, doing great so far. So SLAT is for Symbiosis. It's a very good college. Hello Pixie. I hope everyone is doing fine. Kyle Cool. Good evening. So we are going to cover variety of questions. We are going to cover approximately every topic that is going to appear in SLAT. So this is the first question that we got. Now let's get on with it. Oh, Kiki, how was the ALET result? Did you do great? I find ALET as an awesome exam. They conduct the exam on the same day. They release the response sheet, answer keys, and in next within a week, I would say less than a week, they release the results. So I think, oh, so it's 91, 91. You were just a little missed. So anyhow, don't worry. SLAT is Symbiosis is a good college. In fact, gaming, I'm not very sure, but I think you should be on the edge, little here and there. But cutoffs, I think the paper was easier, so I think cutoffs are going to be little higher. No, I find the paper, I have solved the paper, and I have seen it. The analytical part was extremely easy. Even the other sections were not that difficult. So I would say ELET was their cutoff should be a little higher this time. I don't know what exactly should be cut off, but I think it should be a little higher. तो अभी एलेट को लेके परेशान होने की जगह वी शुड फोकस ऑन symbiosis. Symbiosis is a very good college. I would say 125, 120 to 125 should be a very good score. 125 I think 125 पे तो पक्का हो जाएगा. But below that, the chances are there. I think 120 is fine. ALET 566 now depends. If it is general candidate, then I don't think so. There are chances. Okay, 135, I think it's going to be a little too high, but no. I would say 125-ish would do. In general, 566, no. I think 65, 70 is good. I think 65-ish, 60 to 70, I think is they are going to take in general category. In CLAT, I would say 566 is a decent rank. You would get some good NLU, but in ALET, no. There is only one college, na, NLU Delhi. So, in one college, and you don't have a lot of seats over there. So, that's why. Now, let's solve this question. What's the answer?
Okay. So question number one, what is the approach that we should take to solve this question? Now, if you are going to see, Ravi has a clock shop. Okay, he bought two clocks. One clock cuckoos every 16 minutes. Another one comes out in every 18 minutes, and together they are coming out in at 12 noon. After what time they are going to be out again, and that's the question. So basically first is coming out at 16 minutes, 32 minutes, 48 minutes, and so on. Second one is coming out at 18 minutes, 36 minutes, 54 minutes, and so on. So basically uh, time should be a common multiple for both the clocks. So it should be multiple of 16 as well as 18. So what is the LCM of 16 and 18? And that's what we are supposed to look for. So LCM of 16 and 18. So first of all, what I'm going to do, I'm going to take what is common in 16 and 18. I'm going to take that out. So 2 is common. So I can say 2 into 8. Then I can say 2 into 9. Now I want to calculate LCM. So what I'm going to do, I'm going to take 2 separately. Now 8 into 9. Now this comes out to be 144. So after 144 minutes, they are going to come out again. So 144, you can say 2 hours. So 2 hours is 120 minutes and 24 minutes. So after 12, 224, they are going to cuckoo again. So answer of this question is going to be option C. I hope everyone understood. Okay, very nice, Advait. This one. Okay, now this one. Okay, now is saying D, B, B, B. Okay, D. Aditya also saying okay. So basically, what is the pattern we are following? Okay, so basically, if you look at the second number, if you look at the second number, so first number is 13, 15, 17. These are the initial numbers. So I got 13, 15, and 17. Okay, multiplied by 2 minus 1. So 13 twos are 26 minus 1 give you 25. 15 into 2, 30 minus 1 gives you 29. But 34 minus 1 gives you this. Now, if I go from here to here, what is the logic I am going to take? The same logic it follows. Into 2 minus 1. So 25 into 2 is 50. 50 minus 1 is this. 29 into 2, 58 minus 1. That comes out to be 57. 32, 33 into 2 is going to be what? 66. 66 minus 1 is going to be 67, and that's going to be option B. So basically, this was a very easy pattern, so we can clearly see it and get the answer. Now let's move to the next question. Uh, you can see the differences. If you look at the difference is one less than the actual number. Is it or is it not? Or you can say differences, I think they are getting doubled. 2 gap, 4 gap, 8 gap. Oh, that's also a good way.
ओके नाउ सो हम एआर में मैथ्स नहीं होता है, एआर में रीजनिंग होती है। Okay, so basically, this is one of those topics that I consider as the easiest ones. Now, ज्यादा कुछ करने को होता नहीं है इसमें, जो बोला हुआ है एज इट इज लिखना शुरू कर दो एंड इवेंचुअली यू आर गोइंग टू गेट द आंसर वेरी क्विकली। सो डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन मुझे हमेशा लगते हैं कि डायरेक्शन वाला क्वेश्चन हमेशा हो जाएगा, ज्यादा सोचने समझने का नहीं होता है क्योंकि इसमें। सो बेसिकली अंकित स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पॉइंट पी टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। सो बेसिकली अंकित ऐसे जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ, और सॉरी अर्पित ऐसे जा रहा है, अंकित ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अर्पित तो अच्छा, यहाँ पे इफ ईच ऑफ देम कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 10 बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग अ टर्न, ठीक है। सो बेसिकली इस ये इसने नॉर्थ की तरफ चलना शुरू किया। ओके, सो नॉर्थ की तरफ गया, कितना चला, 10 मीटर, ठीक है। took two left turns, so one left turn, that is going to be this, another left turn, second left turn, so second left turn, so basically this is going to be 10, this is also going to be 10, one right turn का मतलब इधर, that is again going to be 10, uh, and then one left turn मतलब इधर 10। सो अर्पित का फाइनल लोकेशन ये है, ठीक है। अंकित ने राइट लिया, तो राइट में कहा गया, इधर, कितना चला, 10। टू लेफ्ट टर्न का मतलब पहला लेफ्ट टर्न एंड दूसरा लेफ्ट टर्न, सो ये हुआ 10, ये हुआ 10, ठीक है। अंकित अर्पित के रिस्पेक्ट में क्या मैं सही कर रहा हूं? तो ये अंकित है, अंकित अर्पित के रिस्पेक्ट में कहाँ पे है? अर्पित यहाँ पे है, अंकित यहाँ पे है, इससे ऊपर है या नीचे है? नीचे है। तो इसका मतलब ये जो डायरेक्शन होनी चाहिए ये तो साउथ ईस्ट होनी चाहिए, दैट शुड बी ऑप्शन सी। मैंने राइट ले लिया क्या? कहाँ पे? तो यहां से गए, फिर उसने एक लेफ्ट लिया, फिर दूसरा लेफ्ट लिया, फिर एक राइट लिया, ओहो सॉरी, एक लेफ्ट लिया, लेफ्ट तो यही बनेगा इसका, फिर ये गया और इसने एक राइट लिया, राइट इधर बनेगा, और लेफ्ट इधर ही तो बनेगा, और इधर लेफ्ट बनेगा, सॉरी इधर लेफ्ट बनेगा, इधर लेफ्ट बनेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, आई मेड अ ब्लंडर, दिस इज द इजीएस्ट टॉपिक, आई स्टिल मेड द ब्लंडर इन दिस। सो बेसिकली जो अर्पित होगा वो अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। आई एम सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक ओवर हियर, सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, यस यस यस, द आंसर इज गोइंग टू बी दैट, ठीक है। सो दैट वाज solving takes time, Chandralekha. I don't have questions on this. If you can send some questions to me, I would do some questions of syllogism, ठीक है। अगर तुम मुझे क्वेश्चन भेज दो सिलोजिज्म के तो मैं क्वेश्चन करा दूंगा, अभी इसी सेशन में करा दूंगा। डू यू हैव सम क्वेश्चंस विद यू? क्यूटी क्लैट में नहीं आता? ओके, AR and QT are different. AR is analytical reasoning. Whatever we are doing right now is analytical reasoning. It's not QT. QT is part of CLAT, quantitative techniques.
सेल के मॉक में था। मैथ्स एज सच, मैथ्स मतलब परसेंटेज प्रॉफिट लॉस यू आर टॉकिंग अबाउट, और यू आर टॉकिंग अबाउट अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस? लेकिन वो ज्यादा नहीं होती है। एनालिटिकल में क्यूटी बहुत नहीं होता है, थोड़ा सा होता है, एस आई सी आई वगैरह वो सब आता है, ज्यादा नहीं होता है। नहीं नहीं प्रीतिश, दैट इज एक्चुअली देयर इन ए आर। नो, दैट विल कम। क्यूटी इज गोइंग टू बी, अच्छा ठीक है। सो क्यूटी इज ए सेक्शन दैट इज पार्ट ऑफ क्लैट, ठीक है ना। जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट होता है वो इस स्लैट में आता है। कुछ क्वेश्चंस होंगे, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, दे आर गोइंग टू बी इजी क्वेश्चंस, डोंट वरी अबाउट इट। 5x C5, ठीक है, जो भी है, सो दैट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ, डोंट वरी अबाउट, ठीक है। सो आई वाज कंफ्यूज्ड विद द नेम, वी डोंट कॉल इट क्यूटी एनीमोर, ए आर में ही वो कर लेते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन क्या कहता है। किसना इज द ओनली चाइल्ड, ठीक है। Kisna is the only child of the grandfather of Gurmeet. So we have Gurmeet, गुरमीत के ग्रैंडफादर, सो यहाँ पे ग्रैंडफादर हो गए, ठीक है। ग्रैंडफादर ऑफ गुरमीत जो है वो किसना का ओनली, इसका ओनली सन है, ओनली सन है, सो दिस इज किसना। अच्छा ठीक है। सो बेसिकली किसना इज द ओनली सन ऑफ द, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आई मेड अ मिस्टेक। सो बेसिकली वी हैव ग्रैंडफादर, वी हैव गुरमीत, ठीक है। गुरमीत का ओनली चाइल्ड है, यहाँ पे कोई जो होगा वो इसका ग्रैंडफादर का ओनली चाइल्ड जो होगा वो गुरमीत का फादर होगा। और जो किसना है, किसना इज ऑल्सो चाइल्ड ऑफ दिस पर्सन, लेट्स कॉल दिस पर्सन एज एक्स। सो बेसिकली किसना is going to be either, Gurmeet is going to be either brother or sister of Kisna. So answer of this question is going to be option D, that is either A or B, ठीक है। स्लैट में लुक, यार एक तो नाम चेंज कर लो, बोल थोड़ा इशू होता है। तनिशी, आई थिंक आई गॉट इट राइट इन द एंड। सो बेसिकली जो क्लैट है, क्लैट में वी कॉल इट क्यूटी, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, उसमें सेट आते हैं प्रॉपर। इन दैट एग्जाम, कौन सा एग्जाम है अपना, एलेट, एलेट में ए आर आता है, उसमें मैथ्स नहीं आता। क्लैट्स में ए आर आता है, एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग में कुछ जो लॉजिकल रीजनिंग होते हैं उसके क्वेश्चंस होते हैं, मेजर वो क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस तुम्हें क्वांट के भी मिलेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें वो ए आर का ही पार्ट है कुछ क्वेश्चंस, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस होंगे, बेसिक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अब ठीक है।
Advait, we are going to solve that question here. Don't worry about it. We are going to see that what is the approach we are going to take. ठीक है. So मिस्टर दीपक है, उनका बर्थडे है. अच्छा देखो, हमेशा एक बात याद रखो कि when we solve the questions of calendars, what is the approach we follow? The approach is very simple. कि after every 7 days, you are going to have same day of the week. ठीक है. Now, if I'm talking about a particular year, so for example, if I say for example 1 जनवरी 2001 को मंडे था, ठीक है. So if I'm going to say कि 1 जनवरी 2002 को क्या होगा, 1 जनवरी 2002 को क्या होगा. So basically from here to here, how many days we are talking about? We are talking about 365 days, right? ठीक है. So 365 days can be written as 52 weeks plus 1 day. ठीक है. अब 52 वीक्स के बाद तो सेम डे आएगा, तो इसका मतलब जो 1 डे होगा उसकी वजह से एक डे एडिशनली बढ़ जाएगा. सो इट इज गोइंग टू बी ट्यूसडे. नाउ इफ आई से 1 जनवरी 2003 को क्या होगा. अब यहां से यहां भी क्या होगा, एक बढ़ जाएगा. इट इज गोइंग टू बी वेंसडे. नाउ इफ आई से 1 जन 2004 को क्या होगा. अगेन सेम लॉजिक लगाएंगे, एक दिन बढ़ जाएगा. दैट इज गोइंग टू बी थर्सडे. नाउ अगर कोई पूछे 1 जन 2005 को क्या होगा. सो अब यहाँ पे जो बात आएगी, दैट इज नॉट गोइंग टू बी फ्राइडे, दैट इज गोइंग टू बी सैटरडे. क्यों आएगा ऐसा? बिकॉज फ्रॉम 1 जनवरी 2004 to 1 जनवरी 2005 there will not be 365 days, there will be 366 days. ठीक है. सो बेसिकली जो अपना सीन होगा, दैट इज गोइंग टू बी 52 वीक्स प्लस 2 days, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू हैव. ठीक है. सो अगर तुम यहां से यहां आओ, मतलब 4 साल की बात करो, तो 4 साल में यू आर गोइंग टू गेट अ इंक्रीमेंट ऑफ 5 days. इंक्रीमेंट ऑफ 5 days, क्योंकि इफ यू पिक एनी 4 consecutive years, so in 4 consecutive years what is going to happen, you are going to have 3 normal years of 365 days, you are going to have 1 leap year of 366 days. So total number of additional days you are going to get is 5. सो मैं हमेशा ये लेके जाता हूँ कि 4 साल में 5 का इंक्रीमेंट होगा, एंड आई गो अकॉर्डिंग टू दैट. ठीक है. अब यहाँ पे देखते हैं कि मिस्टर दीपक जो है वो 6 दिसंबर 2011 को ट्यूसडे को पैदा हुए. अगेन ट्यूसडे आएगा, मतलब आई नीड नंबर ऑफ एडिशनल डेज शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 7 और 7. सो 6 दिसंबर, या फिर मैं 2011 ले रहा हूँ, तो 2011 से मैं 2000 सीधे 4 साल आगे चला जाता हूँ, 2015. तो 4 साल में मुझे कितने एक्स्ट्रा डे मिलेंगे? मुझे मिलेंगे 5. ठीक. 2015 से 2016 जाऊंगा तो मुझे कितने एक्स्ट्रा दिन मिलेंगे? इज इट 1 और 2? 2015 to 2016, how many additional days we are going to get? 1 or 2? 2 days. And total number of additional days I am going to get 7. So 2016 को same day पड़ेगा. Now basically what happens, let me tell you, which is 366 days. अगर हम बोलते हैं कि लीप ईयर वी गेट 366 days. So now which is 366th day? That is actually 29th February. Everyone agrees with me or not? Arnav, I am coming to that. So basically 366th day is a leap year. 366th day is 29 February or not? Everyone agrees on this? ठीक है. अब फर्क इस बात से पड़ता है, डेट 29 फेब के पहले 29 फेब के बाद है. अगर मैं यहां पे ये बोलूं कि 10 जनवरी 2019 में मेरे पास मंडे है, सो 10 जनवरी 2020 को क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है. तो अब ये ट्यूसडे होगा या वेंसडे होगा?
10 जनवरी 2000, इट इज गोइंग टू बी ट्यूसडे। क्यों? क्योंकि जो डे है वो अपना 29 फेब के पहले का डे है, तो यहां से यहाँ 365 डेज होंगे, 366 डेज नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं यहीं पे ये बोल दूं 10 मार्च 2019 इज माई वेंसडे, सो 10 मार्च 2020 क्या बनेगा मेरा? हम्म that is not going to be Thursday. That is going to be Friday, because this day is lying after 29th of February. तो यहाँ पे जब हम 15 से 16 जा रहे हैं तो हम वी आर टॉकिंग अबाउट 6 December। सो यहाँ से यहाँ 365 डेज नहीं है, 366 डेज है। इसलिए यहाँ से यहाँ पे 2 दिन का जंप आ रहा है। एवरी वन इज क्लियर विद दिस? एवरी वन अंडरस्टूड कि कहाँ पे एक का जंप लेना है, कहाँ पे दो का जंप लेना है? एंड रिमेंबर, रैंडमली इफ आई एम डूइंग एनीथिंग रैंडमली, आई एम जस्ट गोइंग टू गो कि 4 साल में 5 का चेंज होगा, दैट्स इट। 4 साल में कितने का चेंज होगा? 5 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिस वन। सिंपली ऐड कर दो, यू आर गोइंग टू गेट 34। सिंपली ऐड कर दो, यू आर गोइंग टू गेट 24। सिंपली ऐड कर दो, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट 23। दैट्स द आंसर, दैट्स ऑप्शन सी। ठीक है, सो बेसिकली whenever I have taught this coding decoding thing in alphabetic things, so I have already taught this thing कि कभी भी आपके पास अल्फाबेट आए, अल्फाबेट को हमेशा करस्पॉन्डिंग नंबर लिखिए, उससे आपके आंसर्स विजिबल हो जाते हैं। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, दिस वन। ओके, ओके, नाउ these kind of, I'm not going to say these kind of questions are easy, because last time I said it was easy, I got it wrong. Okay, so blood is red, there will be blood. So what is common in both of them? Blood. So blood. Now in the coded language, figure out which what is common. So q, whatever it is, this is common. So I got blood as psi. So blood as psi means this option is gone. Now, Operation Red Brigade. So basically, I got red over here, I got red over here. So the common thing is 4. So that is going to be option C. This one, just give me a moment.
It is computer based. Just give me a moment. Hmm. The answer is B. Okay. Now let me see. So basically, what does it say is Neeraj scored more than Ragini. So we got Neeraj. Neeraj got more than Ragini. Amit scored more than Neeraj. Amit scored more than Neeraj. Pankaj scored less than Kamal. Ragini scored as much as Sachin. So Ragini scored as much as Sachin. Now Kamal scored less than Sachin. So Kamal scored less than Sachin. Pankaj scored less than. Oh, Amit scored more than Neeraj. So basically, this should be Amit. And this is going to be what? Kamal scored less than Sachin and Pankaj scored less than Kamal. Second lowest, that is Kamal, that is option B. Okay, very nice, very nice. This one. Hmm. Okay. F. Okay.
So, do we need to make a circular arrangement? 3, 4, 5, and 6, and 7, and 8. I'm just placing A over here. Now C is immediate neighbor of both G and A. Okay. अब देखो यहाँ पे ये हो सकते हैं कि A, C, G, A, G, sorry, G, C, A. Yes or no? ये होगा कि नहीं होगा? Either of the two scenarios will be possible or not? Yes, no. Okay. Now, this will not be there. Now, can someone tell me why? Second scenario is not at all possible. I'm directly going to write A, C, G. This is right and this is left. Now, why I'm putting C and G directly on the right hand side without reading the second statement? I'm not even reading the second statement. I'm directly placing them on the right hand side only. I can also put them like this now. So A, C, G. That is also a feasible arrangement now. But I am not putting this. I am only putting on the right. I am doing it directly and I can still do it directly. Why? Because if uh, if you put A, then C, then G, who is going to be second to the left? That is going to be G. But G is not even in the option. इसका मतलब G तो हो ही नहीं सकता. इसका मतलब right arrangement तो बन ही नहीं सकता. Got it? Understood? I am saying I am not reading second statement. पहला पढ़ने के बाद ही मैंने arrangement बना लिया. Because look at the options. ठीक है ना? नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर का मतलब लेफ्ट का अरेंजमेंट भी बन सकता है, राइट का भी बन सकता है, लेकिन राइट का नहीं बनेगा, क्योंकि अगर राइट का बनेगा तो राइट के में ऑप्शन में जी होना चाहिए, वो नहीं है. इसलिए अरेंजमेंट सॉरी लेफ्ट में जी होना चाहिए, वो ऑप्शन में नहीं है, तो वो वाला केस ही मैंने रिजेक्ट कर दिया. अब उसके बाद बी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ जी, तो बी यहाँ पे आ गया. ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड एफ, सो बी समथिंग एफ. सो एफ इधर आ गया, तो एफ यहां से ऑप्शन से चला गया, बी भी ऑप्शन से चला गया. अब जी और एच में से एक और कट जाए तो अपना जीवन सेट. टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन ई एंड एच. ई और एच के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं. ठीक है, तो अब देख लेते हैं ई और एच के बगल में कौन कौन बैठा होगा. आ, एक दो, सो या तो ई इधर होगा या एच इधर होगा. हाँ है ना? इन दोनों में से एक अरेंजमेंट आएगा कि नहीं आएगा? राइट. आखिरी आदमी कौन बचा? डी. तो सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन होगा? डी. गॉट द आंसर. दैट्स इट. ई और एच का अरेंजमेंट फिगर आउट ही नहीं करना है. क्लियर? रीड द क्वेश्चन, रीड द ऑप्शंस. ये जो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है ना, ये वो क्वेश्चन है जहां पे टाइम लगता है. लोगों के 2 से 2.5 मिनट चला जाता है लोगों का. इफ यू आर नॉट रीडिंग द ऑप्शंस, यू आर गोइंग टू वेस्ट सम टाइम ऑन दिस. आई एम नॉट सेइंग डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, करते जाओगे हो जाएगा. आसान भी लगता है लोगों को, क्योंकि हो जाता है, फंसता नहीं है कोई. बट इट टेक्स टाइम. अंडरस्टूड? दिस वन.
Okay, now let's start this one. What does it says? So I think this is very easy. This is E. E का number है 5. Next number is 5 square, that is 25. G's number is 7. 7 square, that is 49. I's number is 9. 9 square, that is 81. Then K. K's number is 11. And 11 square is 120. 11 square. Then next should be 13 and 13 square. 13 square is 169 and 13th alphabet is M. So M169, that's going to be option A. Very nice. Everyone got it right. Very nice. Now this one. ओके, अच्छा कैसे करेंगे इसको? हम्म. When I was reading this question, I thought that if I look at this, son's sister is my mother-in-law, right? So basically, there is generational gap. Is it or is it not? Right? So how many thing we have in generational gap? That is only one option. That is grandson. So basically, I am going to say Sushant son, son's sister, मतलब सुशांत की डॉटर इज माई मदर इन लॉ. ठीक है. सो डॉटर का जो सन है, ये जो लेडी वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज द वाइफ ऑफ दैट पर्सन. ठीक है. सो लेडी का जो हस्बैंड है वो सुशांत का ग्रैंड सन होना चाहिए. सो डायरेक्टली गोइंग टू बी ऑप्शन ए. सो व्हेन आई रेड दिस स्टेटमेंट आई थॉट देयर इज गोइंग टू बी द गैप ऑफ जनरेशन है. सो इसका मतलब एक ही ऑप्शन है गैप ऑफ जनरेशन में, दैट इज ग्रैंड सन. सो आई थॉट आंसर शुड बी ऑप्शन ए, दिस वन.
ओके, अब ये वाले क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करेंगे? Yes, math is important, not a lot. Basically, there are math is important. There are certain topics. I would say percentage, profit loss, interest, compound interest, a little bit of TSD. So those things are little important. Apart from that, if you are going to look for algebra kind of thing, you won't see those kind of things. Okay, should we start this one? Okay, okay, ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। अगर मैं बात करूं कि आई एम टॉकिंग अबाउट ट्यूसडे 12 नून, ठीक है। सो ट्यूसडे 12 o'clock, 12 noon, and we are talking about Saturday, 4 p.m. यहाँ पे घड़ी क्या थी? -4 मिनट पे थी। यहाँ पे क्या है? +4 मिनट पे है। डू वी एग्री ऑन दिस? यस और नो? We were at -4. Now we have reached to +4. Yes or no?
-4 से +4 जा रहे हैं। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग करेक्ट टाइम। करेक्ट टाइम का मतलब वी आर गोइंग टू रीच एट 0। सो 0 कहाँ पे आएगा? एग्जैक्टली दोनों के मिड पॉइंट पे आएगा कि नहीं आएगा? राइट, वी गॉट ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। एग्जैक्टली मिड वाला डे कौन सा है? थर्सडे। 12 से लेके 4 के बीच का बीच वाला टाइम क्या है? 2। So basically, at what time it is going to be? Right, Thursday 2. So Thursday 2 p.m. That's going to be option B. Understood? Yes? No? -4 से +4 जाना है। अपन को मिडिल में चाहिए 0 चाहिए। 0 मीन्स राइट टाइम। So how we can get right time? That should be lying exactly in the middle, because I am going from -4 to +4. If I am going from -5 to +5, again it should be midpoint. -10 to +10, it should be midpoint. But the problem arises when I say that it is -6 to +4. Now in that case there might be some problems, लेकिन इसमें नहीं होगा। Clear? This one. ठीक है। What is the approach? हम्म, इसको देखते हैं कैसे करेंगे हम। ठीक है। 3 लोग नॉर्थ में हैं, 3 लोग साउथ में हैं। 3 लोग नॉर्थ देख रहे हैं, 3 लोग साउथ देख रहे हैं। ठीक है। और 5 लोग हैं। ठीक है। लेकिन हमें डायरेक्शन नहीं पता। ठीक है, हमें कुछ तो आइडिया है, कुछ है। ठीक है। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट सेज डी और ई एक्सट्रीमेंट्स में है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि डी इधर खड़ा है, ई इधर खड़ा है। इट कैन बी वाइस वर्सा एज वेल। ठीक है।
पॉइंट नंबर हमें निकालना है, ई के बगल में कौन खड़ा है, एक दो पांच लोग हो गए. आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट, यस नो? एवरीवन इज क्लियर till this point? Now, third statement says between C and D there are two people. So one, two. So C should be here. So who is sitting next to E? That's good. That's going to be C. That's option C. Understood? कुछ नहीं करना है, बाकी स्टेटमेंट सब फर्जी है, किसी काम के नहीं. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट हु इज लेफ्ट हु इज राइट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. Now, this one. Okay, now let's start. What does this question is saying? Okay, so car walked in the south direction. Okay, then turns east. Acha, ठीक है. So the directions. So car is going like this. ठीक है. He is going like this in south. Then he turns towards east. ठीक है. देन लेफ्ट कहाँ पे होगा, इधर होगा. 45 डिग्रीज टुवर्ड लेफ्ट, मतलब ऐसे कुछ जा रहा है. ठीक है. देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट. लेफ्ट का मतलब थोड़ा सा इधर गया. ठीक है. टर्न्स टू हिज लेफ्ट. लेफ्ट यही होगा, 90 डिग्री होगा. यहाँ पे ये एंगल अपना 45 होगा. ठीक है. फाइनली टर्न्स टू हिज लेफ्ट 45 डिग्रीज. इसका जो लेफ्ट होगा वो इधर होगा. सो इधर जा रहा है. नाउ अभी वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्शन ऑफ वेस्ट ही होना चाहिए. ही इज टेकिंग टू 45 डिग्री इज टर्न ना. हाँ. सो बेसिकली साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट तो नहीं होगा. सो बेसिकली पहले वो इधर गया. ठीक है. पहले वो साउथ की तरफ गया, फिर उसने लेफ्ट लिया. उसके बाद देन ही टर्न्स टू. अच्छा, पहले वो साउथ की तरफ गया, फिर वो ईस्ट गया. देन ही टर्न्स 45 डिग्री. सो टर्न 45 डिग्रीज टुवर्ड्स द लेफ्ट. देन वॉक्स. सो मतलब यहाँ पे आया. देन ही टुक हिज लेफ्ट. लेफ्ट का मतलब इधर जाएगा. थोड़ी देर गया. देन ही अगेन टुक 45 डिग्रीज लेफ्ट, मतलब इधर की तरफ आया. विच डायरेक्शन? सो ही इज इन द वेस्ट. सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए. अंडरस्टूड? 45 डिग्री के दो टर्न आ रहे हैं उसमें. समझ में आया ये वाला? यस नो?
इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, वेस्ट होगा। बी और सी नहीं होगा, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नहीं होगा। अच्छा निधि, लेट मी एक्सप्लेन अगेन. So basically, I'm going to draw it again. I'm going to say that Carl is going towards south. तो साउथ का मतलब वो इधर आया, नीचे आया. ठीक है. Then he goes to east. So basically, I'm going to take him here. Then east. Fine. Now he takes 45 degrees. तो वो यहाँ पे जा रहा था. अब उसने 45 डिग्री का टर्न लिया लेफ्ट की डायरेक्शन में. तो वो ऐसे गया, ऐसे चल रहा है. नाउ ही इज वॉकिंग लाइक दिस. Then he walks for a while, then he turns to his left. Now his left is going to be 90 degrees. So that is going to be left. Now he walks for a while. So he is going like this. He is walking for a while. Now he is taking 45 degrees to his left. So his left is going to be this, but he is taking only 45 degrees turn. So that is going to be this. Now what is the direction of Carl? That's going to be west. That is going to be option A. Understood? So ये बात समझ में आई, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट और राइट का टर्न नहीं है, यहाँ पे हाफ लेफ्ट है, हाफ राइट है, राइट नहीं है. सो हाफ लेफ्ट है. So 45 degrees. So basically, when you are going in the northeast direction and you take a turn, so basically, अगर तुम नॉर्थ ईस्ट पे जा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट का मतलब इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है. सो अब तुमने लेफ्ट लिया, तो लेफ्ट का मतलब ये नहीं होगा, लेफ्ट का मतलब ये भी नहीं होगा, लेफ्ट का मतलब ये होगा. लेफ्ट और राइट का मतलब होता है 90 डिग्री टर्न. अंडरस्टूड? लेफ्ट और राइट का मतलब स्ट्रेट हो जाना नहीं है, कि मतलब आप 45 पे जा रहे हो, आपने लेफ्ट लिया तो आप परपेंडिकुलर हो गए या आप हॉरिजॉन्टल हो गए, वो नहीं होगा. लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री टर्न. ठीक है ना? सो नॉर्थ ईस्ट जा रहे हो, आपने लेफ्ट लिया तो आप नॉर्थ वेस्ट हो जाओगे. दिस वन. ओके प्रतीश, ओके निधि, ओके पिक्सी, ओके इशिता, ओके पार्निका, ओके ओके श्री भरानी. Okay. So basically, what is your logic? I want to know what's the logic. Okay, Chandralekha. Okay, Suchi. Okay, DVC. So what's the logic in this? Except C, sum of digits adds up to 9, and that's the only logic you can have over here. So sum of digits is what? In option A, what is the sum of digits? That's going to be what? That's going to be 9. So sum of digits is 9 over here, sum of digits is 9 over here, sum of digits is 12, sum of digits is 9. So which is going to be odd one out? That's going to be option C. This one. Yes, click. Even C is multiple of 6. C is 14 6 are 84. You can say every number is multiple of 9 except C.
The similar question we have already solved. हमको 37 years आगे जाना है. डेट से कोई फर्क पड़ता नहीं है बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर डे. Will date make a difference in this particular question? Okay, Shuchi. Okay. Okay, Shuchi. Okay, Arnav. ठीक है. Should we start? Okay, Chandralekha. Okay, Divina. अब देखो, अपन शुरू कहां से करेंगे? अपन शुरू करेंगे 1965 में. 1965 में अगर मैं पर्टिकुलरली 37 ईयर ऐड करूं तो विच ईयर आई एम गोइंग टू गेट? 1965 plus 37, which year I am going to get? 1965 में 37 ऐड करेंगे 2005 आएगा, 2002 आएगा, राइट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट ईयर 2002. ठीक है. अब अपन देख रहे हैं कि 2002 इज नॉट अ लीप ईयर. हाँ या ना? 2002 जो है वो लीप ईयर तो नहीं है. ठीक है, तो अपन को उसमें टेंशन ही नहीं है कि +2 होगा +1 होगा, उसका कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट? वी आर क्लियर कि +1 ही होगा. ठीक है, यहां तक हम क्लियर है. ना ना शुचि, इट्स फाइन, इट्स फाइन, हो जाता है, कोई इतना स्ट्रेस वाली कोई बात नहीं है. ठीक है, ऑलवेज टेक दीज थिंग्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. सो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि उसमें अपने पास कोई स्ट्रेस नहीं है उस चीज का कि वो ऊपर नीचे कोई गलती होगी. ठीक है. अब दूसरी चीज, which is the closest multiple of which is the multiple of 4 that is very close to 37, smaller than 37, 37 के पास. That is going to be 36. ठीक है.
अब हमको ये पता है कि 4 दिन में एवरी 4 years वी गेट +5 years. So in 36 years, we are going to get 45 additional days. हाँ या ना? Now 37th year is not a leap year, तो इसका मतलब उसमें एक एक्स्ट्रा दिन मिलेगा. So in 37 years, what is the total number of additional days we are going to get? 46 days. Yes or no? यहां तक क्लियर है? Can I say 46 days is equal to 6 weeks and 4 days? मतलब सीधे सीधे 46 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लिया, रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 4. ठीक है, तो इसका मतलब जो उसका बर्थडे होगा वो सैटरडे से 4 दिन आगे होगा. तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, आंसर आ गया वेंसडे. अंडरस्टूड? The same thing that we have done in the previous question, the same thing we are going to do in this particular question. अपन को ये पता होना चाहिए कि 4 के मल्टीपल 36 ईयर्स में 45 का इंक्रीज होगा, क्योंकि 4 साल में 5 बढ़ते हैं, तो 36 में 45 बढ़ेंगे. अब 37th ईयर में वो शायद ये भी हो सकता है कि 2 का इंक्रीमेंट हो, तो उसके लिए हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि विद द फाइनल ईयर वी आर टॉकिंग अबाउट, इज इट अ लीप ईयर और नॉट. So that's the reason I look for 2002. 2002 is not a leap year. If it would have been 2004, तो डेट से फर्क पड़ता. डेट से फर्क क्यों पड़ता? क्योंकि उसमें ये पता होना चाहिए कि डेट 29 के पहले, 29 फेब के पहले या 29 फेब के बाद है, तो उससे फर्क पड़ता है. लेकिन उसमें 2002 आ रहा है, तो 29 फेब तो है ही नहीं, तो पहले हो बाद में हो कोई फर्क नहीं पड़ता. सो ओवरऑल नंबर ऑफ एडिशनल डेज आई एम गेटिंग 46. 46 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 4. सैटरडे से 4 दिन आगे अपना पड़ा वेंसडे, आ गया आंसर. अंडरस्टूड? यस, नो? Anyone has any doubt in this in calendar question? ठीक है निधि. So basically, Nidhi, are we clear on this particular point that in every 4 years we are going to get increment of 5 days? Yes or no? Because every year in 365 days, 365 days is equal to 52 weeks and 1 day. Yes? Okay. So एनी 4 consecutive years में जो लीप ईयर होगा, एनी 4 consecutive years में एक लीप ईयर होगा, 3 नॉर्मल ईयर होंगे. सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एडिशनल डेज वी आर गोइंग टू गेट? वी आर गोइंग टू गेट 5 एडिशनल डेज. सो अब 4 साल में 5, सो 36 years में 45, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 37 years. 37th year इज नॉन लीप ईयर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें तो एक ही दिन एक्स्ट्रा मिलेगा. So in 37 years, total number of additional days are 46. यहां तक क्लियर? ठीक. ओके, डजंट साउंड वेरी कन्विंसिंग. ठीक है. एंड 46 डेज का मतलब होता है कि 6 वीक्स एंड 4 डेज. सो 46 को 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आता है 4, 4 दिन आगे चले जाते हैं. ठीक है, सैटरडे से 4 डेज है. सो आपके जितने भी एडिशनल डेज आए, सो जस्ट काउंट एडिशनल डेज, डिवाइड देम बाय 7. सो विच एवर रिमाइंडर यू गेट, just add that to that particular day. That will be your answer always. I think we are going to have a couple of more questions on this. We are going to see this one. Clear है ना सबको कैलेंडर वाला क्वेश्चन? ओके.
total number of students are 32. Okay. If I talk about Neha, so Neha is here. So Neha is 12th. Okay. If I talk about Inderdeep, so Inderdeep is somewhere here. So behind Inderdeep, there are five people. So Inderdeep is actually sixth person from the behind, right? Now, out of 32 people, 12 people are gone here, six people are gone here. So basically, 18 people are gone. So how many people are left out? 32 minus 18, that's going to be 14 people. So between Neha and Inderdeep, how many people we are going to have? That's going to be option D, that is 14 people. Okay, very nice. This one. Everyone is clear with the previous question? Okay. Check. ओके, कैसे करेंगे इसको? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये करेंगे कैसे ना? अब बेसिकली क्या कह रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं हमेशा, व्हाट इज इट दैट वी डू ऑलवेज? S is 19, T is 20, R is 18. I am writing about straight. A is 1, I is 9, G is 7, H is 8 and T is 20. ये अपना है. उसके बाद if you look at the code, that is going to be 19, then 9, then 6, then 10, then that is 26. ठीक है.
then we have 19, then we have 19, then we have 20. ठीक है. अब देखो 19 to 19 11 का difference, some we can see some random things going on here and there, right? But if you look at this is increment of 1. Then if you look at this, decrement of 1, increment of 1, decrement of 1, increment of 1, decrement of 1, increment of 1, decrement of 1. So we are going plus minus, but from start to back, right? So सबसे पहले +1. तो C का +1 क्या होगा? D. So end में आएगा D. So by that logic I can remove option this. ठीक है. उसके बाद I में होगा -1. तो क्या बनेगा? H. Then by that logic I can remove this option. अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, सो बेसिकली 1 2 3 4, सो ये पहले 3 और आखिरी के 3 तो सेम है. अपन को लास्ट के 2 में कोई देखना है. ठीक है. सो R is going to be S, then C is going to be B. So basically this option is also eliminated. I am getting option B. Understood? Mandeep, you get both the things. You get these kind of questions as well as you get quant questions. You get both. Mandeep, I'm not saying you won't get quant questions. You will also get quant questions. ठीक है? This one. Okay. So how we are going to get this question? Okay. So basically what it is saying, which of the following book is at the bottom? Okay. So B5 is kept immediately above B1. So B5 B1 के ऊपर है.
Now B1 is kept above B2. So B1 is kept above B2. ठीक है. B3 is kept below B2 and B4 is kept below B3. ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. So answer is directly going to be option D. Okay, very nice. This one. Mandi, which exam we are talking about? ALET or CLAT? Okay. Amit said to a woman, okay, what did he say? The sister of your son. So basically, we are talking about woman's daughter, right? So, daughter, the sister of your son, so means woman's daughter, is the daughter of my wife. So, this lady is daughter of Amit's wife. So, this lady is also Amit's daughter, right? So basically, this lady is going to be wife of Amit, and Amit is going to be husband of that lady. So that's going to be option C. Okay, I don't know what kind of question is this. Now this one. Now this question, if I'm talking about this particular clock question, this clock question is basically knowledge-based question. So if you know the answer, you know the answer. It is not something that you can calculate on the spot. So does anyone know the answer of this question? The answer of this question is going to be option B. Always remember that both minute and hour hand overlap 20 sorry, both minute and hour hand overlaps 11 times in 12 hours. So basically, both hands, minute and hour hand, make an angle of 0, that is overlapping, and 180 11 times in 12 hours, in any consecutive 12 hours. And the rest, all the angles and all remaining angles, they make 22 times in 12 hours. So basically, in 24 hours, they make it 44 times. Understood?
So in 12 hours, they make an angle of 90 22 times. So in 24 hours, they make an angle of 90 44 times. So same goes for 90, same goes for 60, same goes for 75, same goes for 95, same goes for 150. This one, again, it's going to be easy one. Dheeraj starts walking towards east. So basically, we got Dheeraj. Dheeraj is doing what? Dheeraj is walking towards east. So Dheeraj is going like this. He walks 75 meters. Okay. Then he turns to his left. Left means this. And he walks 25 meters. Again, he turns left. Left. He goes like this and he travels 40 meters. Then he turns to his left. Left means this and he covers how much? 25. So he went 25 up, 25 down. So he's here. Uh, and then he reaches here. Then what he is doing, he's going 25 meter in this direction. So basically, this is going to be what? I made a mistake somewhere. Okay, okay. So basically, he is reaching here. So this total, let me draw it again. So he is going 75 over here. Then he is going 25 over here. Then he is going 40 over here. Then he is again going 25 over here. So what is the distance between this point and this point? That's going to be 35 meters, and that's going to be option D. Very nice. This one. In a group of six people, one, two, three, four, P, Q, R, S, T, U, no people, no two people are from the same age. Okay, P is younger than R. Okay. In a group of six people, P, Q, R, S, T, U, no two people have same age. Okay, P is younger than R. Okay, so P is younger than R. T is older than both S and Q. U is oldest in the group.
Okay. R is younger than exactly three people. Okay. Okay. Now, basically, R is younger than three people. It means one person should be here, then third person should be R. Okay. Sorry, this person should be R. So I'm going to get someone. Okay. Now, basically, at this position, you can't have R. You can't have P because P is younger than R. You can't have S because S is younger than T. You can't have Q. So who's going to be at the second position? That's going to be T. That's option B. Fairly easy. This one. This one. Okay. Now again, let's see this question very quickly. So basically, horse is black. Okay. So if I look at the first one and second one, so what is the common word we get in? That is horse. Oh, color change. करना है. Okay. So what we are getting? We are getting horse. Horse is here. Horse is here. Now, what is the common thing we are getting? We are getting percentage. Percentage. So horse is percentage. Now I am looking for board is black. सो इसमें हॉर्स तो नहीं होना चाहिए मतलब परसेंटेज तो नहीं होना चाहिए मतलब ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर रिजेक्टेड. ठीक है क्योंकि हॉर्स नहीं बनना चाहिए. नाउ ब्लैक बोर्ड फील्ड. तो अगर मैं यहां पे देखूं सो व्हाट इज ब्लैक. ब्लैक. सो ब्लैक स्टैंड्स फॉर व्हाट इज कॉमन दैट इज डॉलर साइन. ठीक है. एंड आई एम लुकिंग फॉर ब्लैक सो बेसिकली डॉलर साइन तो होना चाहिए. ठीक है. सो आई गॉट अ डॉलर साइन. इसका दोनों में ही आ रहा है. ठीक है. सो इज क्या होना चाहिए एट द रेट. सो इज होना चाहिए इधर. सो ये होना चाहिए. सो ये भी आ गया. अब मेरे को ये चाहिए बोर्ड चाहिए. बोर्ड कहां पे आएगा. सो फील्ड इसमें आ रहा है. फील्ड कहाँ आ रहा है. फील्ड इज दिस. फील्ड इज दिस एंड दिस. फील्ड इज दिस. ठीक है. तो इसका मतलब सी तो नहीं होगा. अगर देखेंगे फील्ड. फील्ड इज दिस. फील्ड इज दिस.
तो इसका मतलब सी तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये साइन तो फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी आर लुकिंग फॉर बोर्ड इज ब्लैंक, सो इसका मतलब आंसर होगा दिस। अंडरस्टूड? एवरीवन मेड द मिस्टेक और आई मेड द मिस्टेक। सबको क्लियर है ना? आंसर इसका ए होगा, वो नहीं होगा। क्लियर? आंसर इज ए, नॉट सी। दिस वन। I think no one did see the sign. Everyone got see. Next one. Just a moment. Hmm. Okay, Adarsh. Mr. Devin was born on Tuesday, January 15, 1967, and blessed his son in 1994. Okay. So January 15, 1967. ठीक है, अपन जा रहे हैं 67 से कहा, 15 Jan 1994। 30 कितने ईयर होंगे? 27। सो 27 नहीं चलते, अपन चलते हैं 24 ईयर्स, मल्टीपल ऑफ 4। ओके, 15 Jan 1991, वी गॉट 24 ईयर्स। ठीक, 24 ईयर्स की अगर हम बात करें, सो 24 ईयर्स, so in every 4 years we are getting 5 years extra. I think I should use a different pen, different color. ठीक है, so 15th Jan 1967 we are here. I am going 15 Jan 1991, that is 24 years. ठीक है, in every 4 years I get 5 days extra, so in 24 years I am going to get 30 days extra. ठीक है,
तो यहाँ पे मिले मुझे 30 डेज एक्स्ट्रा। ठीक। उसके बाद मैं जा रहा हूँ 1992। 1992 15 जन, तो एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। फिर जा रहा हूँ 1993। अब मेरे को 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि 29 फरवरी 15 जन 1992 से 15 जन 1993 के बीच में पड़ेगा। फिर मैं जा रहा हूँ 1994। सो आई एम गोइंग टू गेट वन मोर एक्स्ट्रा डे। सो आई एम स्टार्टिंग एट 15 जन 1994। ठीक है। अब यहां से मुझे जाना है May 23 तक। सो May 23 का मतलब, अब जैन में हम कितने होंगे, 16 मोर डेज, 31 डेज का है। सो जैन में अपन को मिलेगा कितना, 16 डेज का मतलब हो गया 2 दिन एक्स्ट्रा। फेब में कितने मिलेंगे, 1994 लीप ईयर तो है नहीं, तो 0 मिलेंगे। ठीक है। मार्च में कितने मिलेंगे, मार्च का मतलब हो गया अपन को 3 मिलेंगे। अप्रैल में कितने मिलेंगे, अप्रैल में मिलेंगे अपन को 2। और मई में कितने मिलेंगे, मई में भी अपन को 2 मिलेंगे। ठीक। सो ये जो स्टोरी है, यहां तक की जो स्टोरी है, ये है अपनी 1994 May 23 की। सो कितने टोटल एक्स्ट्रा डे मिले, मैं काट देता हूँ। 7 डेज डन। सो दो दो चार दो छ। सो आई एम गेटिंग 30, 31, 33, 35, 35 डेज। ये तो खत्म हो गया। ठीक। सो यहां तक अपन को टोटल एक दिन एक्स्ट्रा मिला। सो अपन खड़े हैं May 23 1994, और एक दिन एक्स्ट्रा मतलब ट्यूसडे से हम पहुंच चुके हैं वेंसडे। एवरीवन इज क्लियर टिल दिस पॉइंट, है ना? अब मुझे जाना है 27 ईयर्स लेटर। सो 24 ईयर्स लेटर अपन का क्या पड़ेगा, 24 ईयर्स लेटर का मतलब पड़ेगा May 23। यहाँ पे क्या आएगा, 2018। 24 ईयर्स, इसका मतलब कितने दिन एक्स्ट्रा, 30। ठीक। 19 में कितना मिलेगा, +1। 20 में कितना मिलेगा, +2। क्योंकि 19 फेब तो 29 फेब तो यही पड़ेगी। 21 में कितना पड़ेगा, +1, और लड़का हो गया 27 साल। तो अपन को कितने एक्स्ट्रा डे मिले, 36 +1, सॉरी 30 +1, 31, 33, 34। 34 एक्स्ट्रा डेज मिले। 34 एक्स्ट्रा डे का मतलब बचा 6 एक्स्ट्रा डेज। सो इसका मतलब वेंसडे से 6 दिन आगे, दैट इज गोइंग टू बी ट्यूसडे। दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। समझ में आया? हाँ या ना? Everyone understood what is the approach? Yes, no? अच्छा देखो, आई टेल यू ऑल्टरनेट अप्रोच टू सॉल्व दिस वन। इतना ताम झंडा करने की जगह अपन दूसरी चीज कर सकते हैं। अपन एक काम कर सकते हैं कि आई एम अगेन स्टार्टिंग द क्वेश्चन। आई एम सेइंग 15 जन 1967। ठीक है। यहां से यहां तक 27 ईयर्स की बात हो रही है। वृंदा, आई एम दिस टाइम आई एम ट्राइंग ऑल्टरनेट अप्रोच। तो यहां से 67 से 94 वी आर टॉकिंग अबाउट 27 ईयर्स, और लड़का भी 27 ईयर्स का हो रहा है, राइट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट 54 ईयर्स लेटर। यस और नो? यहां तक क्लियर है? 54 ईयर्स लेटर का मतलब, 54 ईयर्स लेटर का मतलब क्या होगा, यहां से 54 ईयर्स लेटर जो होगा वो आपका होगा May 23
सिक्सटी 54 ईयर्स लेटर होगा 2021। अपन को यहाँ पे पहुंचना है। ठीक। अपन अब क्या करेंगे, यहां से यहां, मैं डे की बात नहीं कर रहा, मैं ईयर की बात कर रहा हूँ। 54, अगेन द यूजुअल स्टफ। 4 साल में कितने दिन बढ़ते हैं? 5। सो 52 ईयर्स में कितने दिन बढ़ेंगे? 65। मैं तो सीधे यहाँ पे पहुंच गया। तो 52 ईयर्स लेटर क्या बनेगा अपना? 15 जैन, कितना बनेगा? 19, सॉरी, 2009, सॉरी 2019। 52 ईयर्स लेटर अपन यहाँ पे खड़े। ठीक है, यहां तक अपन को कितने एक्स्ट्रा डे मिले? 65। 2019 से 2020 गए, कितने एक्स्ट्रा डे मिले? 1। 2020 से 2021 गए, कितने एक्स्ट्रा? इज इट फाइन नाउ? एम आई विजिबल एंड ऑडिबल? अच्छा ठीक है ना, मेरे घर पे अचानक लाइट चली गई। ठीक है, सो अपन यहाँ पे खड़े। ठीक है, सो वी आर स्टैंडिंग एट 15 जैन 2021 और 65 प्लस 1 प्लस 2, इतना एक्स्ट्रा डे मिला। अब जैन, अब वापस से अपन को वही करना पड़ेगा कि जैन में कितने दिन मिले? 16 डेज आर रिमेनिंग। 16 डेज का मतलब 31 डेज की होती है, तो 16 डेज का मतलब क्या हुआ? 2 वीक्स एंड 2 डेज। इन जैन आई एम गेटिंग 2 extra days. In Feb, how many extra days I will be getting in 21? That is going to be 0. In March, I am going to get 3. In April, I am going to get 2. In May, I am going to get only 2 days क्योंकि I am going only till 23, May 23। तो इसका मतलब 3 weeks and 2 days। तो ये तो अपना चला गया 7 days। 65 प्लस 1 66, 66 प्लस 4 70। 70 एक्स्ट्रा डे मिले अपन को। 70 एक्स्ट्रा डे का मतलब 0 एक्स्ट्रा डे। तो अगर मैं ये बोलूंगा कि ओरिजिनल अगर ट्यूसडे था तो फाइनल क्या होगा? वो भी ट्यूसडे। आंसर इज डायरेक्टली गोइंग टू बी ऑप्शन डी। Understood? So instead of going to child's birth, then calculating for child's birthday, you can directly go to his 27th birthday and save the time. समझ आया सबको? Yes, no? Okay, so basically, I think my time is up. And on for SLAT, we are going to have detailed analysis, memory-based questions we are going to discuss, as well as expected cutoff. And answer keys definitely we are going to discuss. And thank you. जो बाकी बची चीजें हैं, so yes, anyone wants to ask anything, so I'll respond to the queries very quickly. जैन टू मे का मतलब देखो, आई एम नॉट लुकिंग फॉर इंक्रीज, आई एम लुकिंग फॉर एडिशनल। मतलब वीक के ऊपर जितना दिन बनेगा, वी आर टॉकिंग अबाउट 10 days later। So 10 days later, so for example, what is the day today? So today we have which day? I think today is Thursday, right? So if I say on 26th of December, which day you are going to have? So 26th का मतलब 18, 18 से 26, 8 days। 8 days का मतलब 7 plus 1, so one additional day। So you are going from Thursday to one additional day, that is going to be Friday। So that's what we are doing with it। Understood? So in Jan, if I am going to say in Jan, we were standing at 15th Jan। अब Jan में 31 days है, तो 16 days additional चाहिए। 16 days का मतलब 2 weeks and 2 days। वीक से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सेम डे पे एंड करता है। क्लियर?
Nidhi, are we clear? Any doubt now? Okay, with this, let's conclude. Thank you. Take care. Bye bye. And all the best for your exam. और जो भी हो एक बार you have my number. I think all of you have my number. If you don't, you can have my number as well as I'll share my email ID. आप लोगों का स्कोर जो भी आए एक बार बताइएगा जरूर. And if you need anything, any guidance or any help, you can just drop me a mail or drop me a message. And I'll be, if I'm able to help you out, I will definitely be helping you out. So I have just written my mail ID as well as my phone number. So if you need any help, just drop me a message or drop me a mail. I will try to do whatever I can. Okay. Thank you. चलिए.